Greetings everyone! Once again, welcome to my channel Monika Singh Tutorials in which we are learning everyday English. Everyday English में आज हम सीखेंगे कुछ और phrasal verbs that are really important from the point of view of exams. So in this video we are going to learn 10 phrasal verbs. तो start करते हैं आज का lesson. Let's start today's lesson. The first phrasal verb that we are going to learn is brush upon. Brush upon means to review somebody's knowledge. किसी चीज को review करना, किसी चीज को thoroughly read कर लेना. For example, it's been a long time I have not done a practice of speaking English, so I need to brush up my knowledge. So I need to brush up my English speaking skills. यानी कि मतलब काफ़ी टाइम हो गया मैंने स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं की, तो अब मुझे अपनी जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है, राइट? तो ब्रश अप मीन्स टू रिव्यू समथिंग और टू स्टडी समथिंग थॉरोली. The next phrasal verb is butter up. Butter up means किसी को मक्खन लगाना. Like Ram, he butter up the boss just for the sake of promotion, right? To praise someone falsely. Butter up means to praise someone falsely. किसी का मतलब ऐसे ही तारीफ करना. क्यों butter up कर रहे हैं? The Ram he wants a promotion. That's why he butter up the boss, right? The third one is burn up. Burn up has two meanings. जो burn up है उसकी दो मीनिंग है. The first meaning of burn up is to destroy with fire, मतलब जो आग है उससे किसी चीज का खत्म हो जाना. और burn up also means to become very angry. For example, if I say that his rude behavior burned me up, उसका जो rude behavior था उसने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया. तो burn up means to make someone angry or to destroy something, right? The fourth phrasal verb is check in. Check in हम करते हैं किसी होटल में. Like if you go somewhere, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर जाकर check in करते हैं. Check in means my flight is at 6 o'clock in the morning, so I will check in by 9 o'clock in the morning. मतलब मैं 9 o'clock तक check in कर जाऊँगी, right? इसी का opposite होता है check out. Check out means to come out from the hotel. I will check out at 6 p.m. in the evening. मतलब मैं check out करूँगी किस टाइम पे 6 बजे शाम को, right? The next one is chew out. Chew out means किसी को बहुत बुरे तरीके से डांट देना. For example, if I say that my father chewed me out when he saw that I met with an accident. मतलब जो मेरे father थे वो मेरे ऊपर मतलब बहुत बुरी तरीके से उन्होंने डांटा मुझे जब उन्होंने देखा कि मेरा accident हो गया है, right? The next one is check off. Check off होता है जैसे हम टिक 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 करते जाते हैं ना बॉक्सेस में टिक करते हैं. तो you can say that I check off all the sentences or I check off all the statements. यानी कि मैंने सबको check कर लिया, right? So check off means to mark tick. The next phrasal verb is count on. Count on होता है किसी के ऊपर भरोसा करना, to trust someone. For example, I count on my friends. मैं अपने दोस्तों के ऊपर पूरा भरोसा कर सकती हूँ, right? You cannot count on him as he is not a honest man. तुम उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो कोई ईमानदार आदमी नहीं है, right? The next phrasal verb is butt in. Butt in means butt in का मतलब होता है interrupt करना, किसी की बात करते हुए किसी के बीच में बोलना. तो हम इसको थोड़ा सा रूडली यूज करते हैं. लाइक इफ समबडी इज टॉकिंग डोंट बट इन, जस्ट डू योर ओन वर्क. मतलब इंटरप्ट मत करो बीच में, अपना काम करो जाके, राइट? तो बट इन मींस टू इंटरप्ट. The last phrasal verb for today is chip in. Chip in means to donate something. For example, I'm collecting the money for orphanage. If you like to chip in, यानी कि मैं जो orphanage है उसके लिए पैसे कलेक्ट कर रही हूँ, अगर तुम उसमें कुछ डोनेट करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो या नहीं. तो chip in means to donate. So these were the phrasal verbs for today. I hope you liked it. पसंद आई होंगी. पसंद आई है तो प्लीज़ जो वीडियो है उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें. Thank you and have a nice day.